Hi, good morning. Good morning, sir. Good morning. So can you hear me properly? Audible? Huh? Yes, yes, sir. Fantastic. Hi, Rajeshwari. How are you? Hello, sir. Awesome. Awesome. You're having a great time every weekend. Yes, sir. Fantastic. Fantastic. Okay. So let me have some quick feedback from you guys about the session, about the program so far. Just 1 minute, 2 minute, what you are experiencing for yourself. Yes, go ahead, Manoj. Sir, actually, as I was telling you, since last 2, 3 sessions, I have not joined actually. Whatever Experience. you have gone through so far. Don't say what you didn't get. Only say what you get. Sir, actually, I think I have joined only 1, 2 classes of this Mega Mastermind, Mhm. and have not done so much work Do not say assignment. I haven't But done so much. Only talk about what you done, what you have done. No, सबकॉन्शियस को मैसेज देना ही नहीं कि क्या नहीं किया मैंने. सबकॉन्शियस को यही मैसेज देके देना कि मैंने किया क्या. no, sir, after joining this session, actually, just I was figuring out how I will earn some extra income from my except my job, etc. And also working on that. Also, I have opened an separate account as you have suggested. Whatever income I will earn from the extra source, I have to put there. And 2, 3 things I have done this, but seriously, I have to do how this thing will executed. Actually. Okay, fantastic. Yes, Rajeshwari. So far, what is your experience? क्या My मिला? experience, yes, my experience for this MM3MM Money Magical Mindset program is very good. The money that I have paid you, I have recovered two. Means for the two session. Now for this session, I'm just thinking, I'm working that whatever I've invested, I have to take out. So, as you have shared the seat with us, what's stopping me from making the money? I did. I got 8 yes. So, money blockages for me is that I am unclear about my financial goal or targets. This I will be fixing. Then, do you ignore or delay action on new opportunities? Yes, I'm doing. I having a website, but I'm not utilizing it properly. Do you depend on others to validate your money decision? Yes, I do. Because of my less investment knowledge, what I feel I'm not that much calculative. I love to learn, but I have to calculate and invest. That I have to learn. And then this money mindset, my money mindset is good. I have I have a super healthy relationship with the money and financial wealth. I am physically and mentally, emotionally and spiritually aligned to receive abundance and prosperity in all forms and shapes. So my energy, this money mindset is good. Energy worksheet is also good. Only 2, 3 blockages, that is so that I have reframed for me. So I'm serious now about this. So first of all, what I think financial goal I have to set means in a month or in a day how much I want. Okay. Money blessing I'm doing. Money goals earlier I was writing, so I will be fixing that also. At least one money goals and blessings I am receiving. Goals I have to clear. Okay. Fantastic. So, like if I ask you that, would you like to recommend this program to anybody? Yes, today I and my husband did that worksheet together. So he's taking Wow. a test.
He showed me that not to worry. I have the money that you are giving. So investment has increased. If as a partner, if I am seeing, so our money relationship is now becoming good. We have invested more a lot. For my daughter also, he's keeping the money separately. I don't have to take, or he don't have to take the money from others. So for that, I'm very happy. Mm, At least then also I want to increase my own wealth in my account. brilliant, brilliant. You have not subscribed for that one stock idea group. I'm feeling that I'm not that much good in stock. वो मुझे पता So, नहीं अभी वो फेथ ही नहीं हो रहा कि मैं स्टॉक वगैरह हैंडल कर सकती हूँ. He loves, my husband loves. I am not. so you can become a part of it anyway, right? At least because you can see that Okay, what is happening. I will be sending his number. You just add him. So you add him in the money magnet master. Sorry, you add him in that magic of transformation group first, Okay. and from like just send that link to him. Let him join that group, and then from there he can take interest in the other group. वहाँ पे खाली रिक्वेस्ट ही डालना है मेरे को तो अप्रूव करना Yes. है ना okay let us do something amazing today and this is let me share this screen where have I kept see the last session that we had on 12th session now there was an activity okay and to identify the top 3 money blockages that you have. So if you have done it, just let me know. If you haven't done it, just do it right away. Not done. You haven't done it? Okay. So let me put it this way. Um, so I'm sharing the screen. So how many of you have done this activity? This was suggested last to last Sunday. Yes. This I did. Yeah. As I I'm- said, my target is not, I have, yeah. I think So question number 5 for me, are you 5 and unclear about 6. your financial goals or targets? Now you have done it, right? That's what you're saying. And then I suggested another session which we did last week, last Sunday, about let me share that screen as well. Hi Poonam. Hi, good morning. So this is also what we shared last week, that 5 magical steps to break your money blocks. Okay. So how many of you have done this? I have not done this one. अच्छा ठीक है एक चलो मान लेते हैं हमने हम में से किसी ने ये नहीं किया ठीक है so हाँ मान लेते हैं let us assume that we haven't none of us have done this yeah that will be easier to do so हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ से so these were our money blocks I want you to go through this right away right now so you just keep writing yes for the ones which you think they are yes okay so I'm telling you I'm asking you the questions your job is only to write the yes ones and actually note the ones जिसके against में आपने yes लिखा है जो no है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं just let them wherever they are okay मैं 1 मिनट पेन दे के आती हूँ. हाँ 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 this is going to a phenomenal experience you know like
I believe we are all working on that goal of creating that 1 lakh rupees to spend on yourself on 1st January 2026. Are you? Yes, sir. उसकी तैयारी चल रही है ना, या उसको जस्ट निग्लेक्ट कर दो, चलो होगा होगा देखा जाएगा, क्या जरूरत है? किसका? 1st January 2026, you will be spending 1 lakh rupee on yourself. Yes. And that 1 lakh rupee you will be generating from month culture from today onwards. It is not what you already have. वहां पे कुछ छूने का जरूरत नहीं. You will be creating it. Yes. See, that is the game. Otherwise, money magnet mastermind में आने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं. And if I am unable to generate that extra money by my participation in this program, there is no point being in the program at all. You can just say goodbye. So prepare yourself for that. You have to have that vision in your mind and make sure that आप हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ करो, so that that money is getting accumulated. It has to be visible in your eyes. It has to be visible. कुछ नहीं है तो I also suggested that आप कम से कम 11 रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर करो हर दिन. Create an account, right? कोटक महिंद्रा का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कोटक 811. अभी पेटीएम भी खुल गया दोबारा, सो आप पेटीएम का भी अकाउंट खोल सकते हो. पेमेंट्स बैंक का एक अकाउंट आपने खोल के रखो, वहां पे खाली आपको हर दिन ट्रांजैक्शन दिखना है. एंड दैट मिनिमम ट्रांजैक्शन शुड बी 11 रुपीज. अगर कहीं से नहीं हो रहा तो अपने ही अकाउंट से ट्रांसफर करो, लेकिन वहां पे अमाउंट दिखना है और उस अमाउंट को कहीं नहीं, कुछ भी नहीं करने का है. योर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू एंश्योर दैट दैट अकाउंट touches a figure of 6-figure income by the end of this year, so that on 1st January you are going to spend that money on yourself. And actually, मतलब मेरा तो इंटेंशन है कि हम सब मिलकर कहीं जाके उसको सेलिब्रेट करेंगे तरीके से. We can actually have a business meeting over there. हम वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करेंगे and we'll spend time over there. हम आसपास घूम के भी देखेंगे. And how about if that place is Andaman and Nicobar Island? मैं तो उतना दूर सोच रहा हूँ. या सब अपने अपने खर्चे से जाएंगे, लेकिन हम सब मिलके जाएंगे तो we can have a very good budget at a low cost, at a compact budget form, है ना? सब मिलके जाएंगे तो मजा ही कुछ और होता है, खर्चे भी कम होते हैं, है ना? मजे भी करेंगे. We can have our actual physical meeting. Yes. है ना? पूरी तैयारी के साथ. Brainstorming ideas and all, and that collective energy. Exactly. तो इसीलिए कह रहा हूँ अपने लिए कम से 1 लाख रुपए अलग से जनरेट कर दो, so that money we will be spending on ourselves. आपको ऐसा नहीं लगे कि ये पैसा मैं अपने कहीं और से निकाल के खर्च कर रही हूँ, देन उसमें मजा नहीं है. We will be generating that fund from this whole program itself. इसी से जनरेट करेंगे, है ना? And one option I have already shared with you, that you just go and sell the same program. इसी प्रोग्राम को आप बेचो, बेच के इसी से फंड्स जनरेट करो. You have to generate funds. It's not about earning money. There's a difference. Generating fun. It's not about earning money. It's about generating funds. True. है ना? So आप मन को मान के चलो कि आपको एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करना है. आप मान के चलो बिजनेस मीटिंग का आप ही प्रेजेंटर है और आप ही अटेंडेंट. यू आर द होस्ट, यू आर द गेस्ट, और उसका आपका खर्चा आएगा 1 लाख रुपए. And that money you will be investing, spending whatever on 1st January 2026. Okay. But if you can plug it with a tour package, then we can spend that money over a period of 5 days instead of 1 day. 5 दिन 6 दिन के हम उसमें सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं. We can include our travel, we can include our hotel accommodation, we can include our food, we can include our tour, आसपास के टूरिस्ट साइट सीइंग इंक्लूड कर सकते हैं. एंड वी कैन इंक्लूड आवर कॉन्फ्रेंस ऑल्सो. हम लोग वहाँ पे प्रॉपर बिजनेस एक्यूमेंट लेके जाएंगे. इट्स नॉट कि हम वहाँ पे घूमने जा रहे हैं. इसी थॉट को लेके जाएंगे that we are going there to attend a business conference, and that we will be doing together. हम सब एक दूसरे से मिलके करेंगे. मतलब इतना बड़ा विजन आपको लेके चलना पड़ेगा, तब जाके उस पे काम बनेगा.
अब एक्चुअली सबकॉन्शियस शुड बी क्लियर कि चाहिए क्यों है। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली टैक्स है और हम बोल रहे हैं हमारा तो सब पूरा है, देन इट्स नॉट फाइंडिंग वेज। you find your own why, that why do you want to make it happen, है ना। मैंने अपने लिए जो why क्रिएट किया कि I just want to tell myself that yes I can generate 1 lakh rupee for myself to attend this program or attend this vacation or whatever, I can do it। अगर मैं 1 लाख जनरेट कर सकता हूँ तो मैं 10 लाख भी जनरेट कर सकता हूँ, फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल, खाली इसको 10 टाइम्स करना, दैट्स इट। सो उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करने का हमारे मनी ब्लॉक्स क्या है। So now we are in that part of the program जहाँ पे we are identifying our money blocks, like the blocks जो हमारे रास्ते में as a hurdle खड़े हो रहे हैं लेकिन हम पता तक नहीं है। That is the whole intention of this part of the program, where we are identifying the money blocks and eventually working on them so that we can remove those money blocks. Okay, so let me share the screen once again. So everybody is clear about it, right? Manoj, Poonam, Rajeshwar, everybody clear? यस। है ना। पूरा अपने सोच को उस ट्रेजेक्टरी में लेके चले जाओ, ये सोच रहे ही नहीं कि मेरे से पॉसिबल नहीं। और ध्यान हो सके तो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स वहीं पे रखो हर दिन कि आज मैंने क्या किया टू जनरेट दैट 1 लाख, आज मैंने क्या किया टू जनरेट दैट 1 लाख। इफ देयर आर 180 डेज फॉर एग्जांपल ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स, 180, आप 1 लाख को 180 से डिवाइड कर दो, मान के चलो 200 डेज ऑन एन एवरेज, एवरी डे यू हैव टू जनरेट 500 रुपीज समहाउ so that that 1 lakh rupees generated। उसके लिए हम तरीका क्या अपना सकते हैं, and this will not be a linear income, by the way, this will be an exponential income। it is not कि मैं हर दिन 500 रुपए इकट्ठे कर रहा हूँ, नो। आप 500 रुपए जहां से इकट्ठे कर रहे हो, 1 महीने बाद उसी सोर्स से आपको 1500 रुपए निकालना है पर डे। That's why we are talking about setting up a system। I will come there, we will be setting up a system such that it works in our favor। One of the option that I'm suggesting you is to apply this technique। जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ आप उसी को लोगों को सिखाना शुरू करो। पहले कुछ फ्री सेशन कर दो, फिर उनको पेड सेशन में लेके आओ। स्टार्ट डिलीवरिंग दो सेशन, टेल पीपल दैट दिस इज व्हाट आई एम इनटू। हो सके you are paying me 11 but you can deliver the same session to 10 people for 101 111 and you can recover your money। कल उसी प्रोग्राम को आप 222 कर दो, उसी प्रोग्राम को कल आप 323 कर दो। over a period of 6 months you will be generating the same money, you already have a team। शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैंने एक ब्लॉग रिसेंटली लिखा है विच इज ऑल अबाउट माइंडसेट ओवर स्किल सेट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट वन ब्लॉग इट हैज ट्रांसफॉर्म मी लाइक एनीथिंग। I thought about writing it down and eventually I wrote it down। और जिससे भी मेरी बात हो रही है मैं उसी को वो शेयर कर रहा हूँ। मैं अगर आप इसको पढ़ो और इसको अपनाओ। See, it's not about skill set, it's about mindset। मैं लिख सकता हूँ, that is skill set, I can write, but writing a journal every day is a mindset। You know, writing down in your goals is a mindset। लिखना is not a mindset। लिखने का स्किल हर एक के पास, हर कोई लिख सकता है, हर बच्चा लिख सकता है, इसीलिए एग्जाम में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। लेकिन उसी एग्जाम में अगर 60% लाना है, 80% लाना है, आपको उस तरीके का माइंडसेट चाहिए कि मैं 80% का माइंडसेट लेके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लिखना तो मेरे को उसी पेन से ही है, उसी पेपर में ही है ना। इट्स नॉट अबाउट स्किल सेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। In this program what we are doing, we are developing our mindset, at the same time we are also developing our skill set। तो उस mindset को support करने के लिए जो skill set है हम उसको भी साथ साथ develop करें। तो इसको ना आप इतना lightly मत लीजिए ना। It looks very light but actually there is no money involved। उतना पैसा तो आप ऑफिस में जाओगे, ऑफिस से वापस आओगे, खर्चा हो जाता। तो it's not about that money part, it's all about that mindset part। You really need to work hard on your mindset। पाके हीरा को चमकाने के लिए उसके घिसना पड़ता है ना। घिसना स्किल सेट है, चमकाना माइंड सेट है। Okay, so let me share that screen once again and let us go through it।
So here we go. So I am asking the question, your only job is to write answers. Question ka number likhna, or if it is yes, only then write a yes. Otherwise, just don't write that question number also. Okay. So let us go through it. And seriously, take it absolutely seriously. Okay. Assume that your life is depending on this. है ना, इतना seriousness इसको डालो. For next 20 minutes, 30 minutes, इतना सा seriousness आप इस session में डालो. So here we go. Do you avoid taking risks, even small ones? If your answer is yes, just write one yes. Or just at least write the question numbers where the answer is yes. Second question is, are you overwhelmed by too many ideas or choices? If you do not understand any of the questions, by the way, just catch me immediately. Pinaki, repeat this again. Yeah, मेरे को ये बता दो. Because I do not want to repeat this. I want you to repeat this activity for next 7 days. And you have to do it proactively with yourself. Nobody is going to run after you with a danda. किया कि नहीं किया कि नहीं किया कि. Okay. So question number 1, do you avoid taking risks, even small ones? If your answer is yes, only then write the question number 1. Okay. Number 2, are you overwhelmed by too many ideas or choices? मेरे पास बहुत सारे आइडिया है, बहुत सारा चॉइस है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको फॉलो करूं. If your answer is yes, only then write number 2. Number 3, do you often procrastinate on money making ideas? Yeah, procrastination could be कि आज ये इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, आज मनी मैग्नेट मास्टरमाइंड का जो भी एक्टिविटी है, होमवर्क है, उसको करने की जरूरत नहीं, छोड़ो, कल देखा जाएगा. ये आपने उसके लिए एक टाइम सेट करके रखे, सुबह उठ के ही मैं within 5 minutes I will do this activity for myself, and then that 5 minutes went away. Maybe you have put our time, okay, around 6 o'clock in the morning I will do this activity, and for some reason you couldn't do it at 6 o'clock, and then you procrastinated it कि चलो आज हुआ नहीं, कल करेंगे. I'm talking about money making ideas. Like you already have money making ideas, but you are avoiding them. You are procrastinating them. Okay. I'm giving you multiple money making ideas to different programs. This one stock idea is also exactly that same thing. उसमें मैं आपको पैसा कमाने का आइडिया दे रहा हूँ. आप एक चीज नोटिस कीजिए, मेरे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, मैं पहले आपको पैसा कमाने का आइडिया देता हूँ, उसके बाद मैं उसको सपोर्ट करने के लिए आपका स्किल सेट बढ़ाने की तैयारी करता हूँ. इन ऑल माई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स I always and always talk about how you can make at least 1 rupee extra. That is the first thing which I do, followed by adequate skill set which you need to get that. You know, आपको ऐसा कोई ट्रेनिंग अभी तक मिलेगा नहीं. People are talking about you come and take my training and then you apply, फिर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपकी तकदीर है. I'm not talking about that. I am talking about a specific money making idea, and I'm giving you all supporting knowledge, evidence, skill set along with my own experience. You just need to apply it and you just see whether it is working or not. That's it. Okay. So question number 4, are you afraid of being judged or rejected by others? कि मैं किसी को बोलता हूँ कि यार तुम मुझे 111 रुपए दो, मैं तुम्हें एक पैसा कमाने का आइडिया देता हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मेरे से पैसे वापस कर लो. बट मांगना, आस्किंग फॉर इट, पहले दो, तुम्हें फिर मैं आइडिया देता हूँ, फिर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मेरे से पैसे मांगना, मैं वापस कर दूंगा. Are you afraid of being judged or rejected by others? People may reject you or they may judge you. पता नहीं 111 रुपए में तुम क्या दोगे, क्यों मांग रहे हो पैसे भाई, कौन सी बड़ी बात है ना. People may judge you and you are afraid of that. I do not want anybody to think. You know, when you focus on what people think, you are into a people thinking business. Do you know that? You're in a business where you're only thinking about what others will think about you. And you cannot make money out of that business, by the way. But that is also business. Many people, they do this business. Some of them are even expert in that. Yeah. Then comes question number 5. Are you unclear about your financial goals or targets? Most people are. You know, when I talk about question number 5, मैं उनको ये बोलता हूँ कि यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला, उधर जाने की जरूरत नहीं है, अपना बजट बनाओ. You apply the same logic, same techniques
to design the budget of your own family. उसी में देखो कितना fiscal deficit है ना, you have your own plans, उसमें देखो कितना fiscal deficit है, कहाँ से पैसा है, मनी कहाँ से आ रहा है ना। जिस दिन यूनियन बजट डिक्लेयर होता है उसके नेक्स्ट डे सारे अखबारों में ये मैसेज आता है पैसा कहाँ से आ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ, ये जहां से पैसे आ रहे हैं उसमें से मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, है ना। इफ यू वांट टू एनालाइज द यूनियन बजट ऑफ द कंट्री, स्टार्ट वर्किंग ऑन द बजट ऑफ योर ओन फैमिली। आप मास्टरपीस बन जाओगे। आई एम टेलिंग यू, द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज सो ब्यूटीफुली डिजाइन। उसका अगर आप तरीके से स्टडी करोगे अपने परिवार के लिए, अपनी परिवार की खुशहाली के लिए, आपको इतना अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे जो आज तक शायद आपने देखा नहीं होगा। यू नो मोस्ट पीपल व्हाट दे वॉच इन दैट यूनियन बजट, कितना टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, इनकम टैक्स बेनिफिट, बस उतना सा देखने के लिए वो वेट करते रहते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर भी उसी को डिक्लेयर करने के लिए वेट करती रहती है, एकदम लास्ट में आके बोलती है कि आप अपने इनकम टैक्स कितना बचाओगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स बचाना भी इनकम ही है, एंड पीपल ओनली फोकस ऑन दैट इनकम। कितना टैक्स बचा लिया, कितना टैक्स वापस करवा लिया, रिफंड करवा लिया, सो दैट इज माय इनकम। However, if you just study the budget, even if you start applying 10% of it, I can guarantee you आपकी परिवार का इनकम, मैं I'm talking about the inter family income, will at least grow by 10%। आप कम से कम अपना इनकम को आप इन्फ्लेशन प्रूफ बना सकते हो by simply studying the budget, और उसका अगर 10% ही अप्लाई कर दिया तो। Okay, next question. Question number 6. Do you ignore or delay actions on new opportunities? Like attending this program or working on the activity which is suggested in this program is a new opportunity for you. Do you ignore or delay actions on this new opportunity? Like even if you don't attend the session, the information is there, it is being shared in the group. If you're ignoring it, if you're delaying actions on new opportunities, just write yes. Nothing wrong with this, by the way. जितने भी सवालों का आंसर yes है, they are none of the purpose of none of these questions to prove that you are wrong. The purpose of this question is to identify where are my money blocks, which are already there but I am not aware of them. That's it. खाली उनको identify करना. So do not get into a guilt state. Nothing to be guilty about. ठीक है? Number 7. Are you holding on to past financial failures or regrets? कि मैंने पहले स्टॉक में इतना पैसा लगा था, उसमें इतना लॉस हो गया था, तो अब इससे मैं आगे मैं स्टॉक में पैसा लगाऊंगा ही नहीं। या मैंने किसी को लोन दिया था, इट डिडंट वर्क। या मैंने कहीं पे कुछ सीखने के लिए किताबें खरीदी थी, वो किताब आज तक मैंने एक पन्ना भी पलट के देखा नहीं, तो आई विल नॉट बाय एनी बुक्स। या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आई परचेज अ न्यू डायरी, आई स्टार्टेड राइटिंग इन इट, 4-5 दिन खूब लिखा, फिर उस डायरी में आज तक मैंने कुछ लिखा नहीं। सो आई डोंट नीड टू बाय एनी डायरी नाउ, आई विल जस्ट टेक अ स्मॉल राइटिंग पैड, उसी में जो होगा होगा, उसी को मैं 5 साल से यूज कर रहा हूँ। Yeah, so do you like are you holding on to your past financial failures or regrets? Question number 8. Do you resist marketing, selling, or promoting yourself? If you are doing this, I am telling you, you are doing the biggest blunder with yourself. Marketing, selling is always not about doing something with money. Marketing, selling can be also about this is the book I am reading nowadays. उसके अंदर ये चीजें जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उसमें मैंने ये अप्लाई किया और मुझे ये रिजल्ट मिला. This is also marketing. Marketing is like, I am watching this movie, I am watching this series. लोग मार्केटिंग करते हैं ना कि मैं नेटफ्लिक्स में आजकल ये देख रही हूँ और प्राइम वीडियो में ये देख रही हूँ, ये सीरीज देख रहा हूँ.
मुझे बहुत जबरदस्त लगा, मैं तो आंखें बंद ही नहीं कर पाया, पूरा सीरीज देख लिया सारा रात। योर मार्केटिंग, you like something about Brahma Kumaris, your marketing. You like something about Osho, your marketing. You like something about somebody, your marketing. However, you are not doing it for yourself with conscious awareness. So, do you resist marketing, selling, and promoting yourself? If your answer is yes, better write question number 8. Now, question number 9. Are you afraid of success and the changes it might bring? Many people are. Many people are afraid of their success and the changes it might bring. One of the fear which I had with success is that the more I become engaged into this training program, the less I will have time for my family. क्योंकि एक मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस ऑलरेडी है विच इज इन डिजिटल मार्केटिंग, उसमें मेरा बहुत टाइम जाता है. ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम इनटू this business now, coaching business. Now it has also started taking my time. And then आजकल चारों तरफ एक बहुत कॉमन फ्रेज चल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस. I started saying, why we need to balance work and life? They are two different things altogether. How about work life harmony? When ICAI का एक प्लेटफॉर्म है which is all about work life balance, I suggested पूनम उनको बोलो बैलेंस की जरूरत नहीं यार, उसको चेंज करके हार्मनी बनाओ. Work life harmony, so that I'm enjoying both of them. I'm enjoying both the worlds. Why there should be balance? बैलेंस होगा तो एक नीचे आएगा तो दूसरे ऊपर चला जाएगा, दूसरा नीचे आएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा. बैलेंस की कोई जरूरत नहीं. Maintaining balance is the most difficult task in the world. Think about it. You are walking on a rope. Is it easy to maintain balance? How about maintaining harmony? You are walking on the same rope, but now you have two sticks with you. This is what harmony is all about. Isn't it? So, are you afraid of success and then the changes it might bring? Then comes the next question number, which is 10. Are you stuck in a comfort zone that is financially limiting? For most people, this is your salary. That is your comfort zone. As long as I'm getting my salary, I'm okay with that. मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ करने की कोशिश करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास मेरा सैलरी है, आई एम हैप्पी विद दैट. Yeah, so if that is the case, your answer should be yes. If that is not the case, you can just neglect it. Question number 11. Do you depend on others to validate your money decisions? Extremely crucial, extremely critical. And you need to check it with your spouse first, Is your spouse going through this? That does he or she depend on you to validate their money decisions? It may be happening with you also, but at the same time, if it is not happening with you, then check with your spouse. Okay. Then question number 12. Are you waiting for the perfect time or opportunity to start? There is no perfect time or no perfect opportunity to start. The only perfect time, only perfect opportunity is to starting it right now. Because the only time that you have is from right now till you go to bed tonight. That is the only time. Okay, question number 13. Do you believe making money requires struggle and sacrifice? Okay, question number 14. Do you compare yourself constantly to others who earn more?
उसके पास तो पैसा ज्यादा है, मेरे पास कम है। He has a 3 bedroom फ्लैट, मेरे पास 2 bedroom फ्लैट है। इसके पास खुद का अपना फ्लैट है, मैं तो रेंट पे हूँ। उसके पास गाड़ी है बड़ी वाली, मेरे पास छोटी वाली गाड़ी। उसके पास ईवी गाड़ी है, आई एम स्टिल रनिंग अ पेट्रोल कार, है ना। उसके बच्चे इस स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल का फीस ज्यादा है, ही कैन अफोर्ड। Yeah, so these are the thoughts which might be there. If you are having these kind of thoughts, write a yes, otherwise leave it. Okay, question number 15. Do you believe you are not good enough to succeed financially? फाइनेंशियल सक्सेस मेरी बस की है नहीं, मेरे भाग्य में है ही नहीं। मुझे तो जितना मिल रहा है बस मैं इतना ही, इतने का ही मैं काबिल हूँ। This much I deserve and this much I get. I don't deserve anything beyond this, so naturally I do not get anything beyond this. And आगे भी जाके मिलने वाला नहीं है। It has become a permanent tense for you. पास्ट भी नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है। हर जगह पे वो बिलोंग कर रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ टू मेक एक्स्ट्रा मनी, आई एम नॉट गुड इनफ टू बिकम फाइनेंशियली वेल ऑफ, है ना। अगर ऐसा है, उसका आंसर ये होना चाहिए। Then comes 16. Do you feel unsure about what product, service or skill to offer? चलो आपने तय कर लिया कि चलो मुझे कुछ ना कुछ करना है, आई रियली वांट टू डू समथिंग, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, बट व्हाट प्रोडक्ट और व्हाट सर्विस और स्किल आई कैन ऑफर such that I can make some extra money. You are unsure. Okay, I know some people who are making money by simply reading books. You know that? They have a group of people. They charge a small money from them. They themselves read the book for them. They themselves explain it to them. And people are happy. हमारे NLP कम्युनिटी में ऐसे 2 लोग हैं। They only read book. उनके साथ जो लोग हैं वो भी उनके साथ ही किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वो सुनते हैं। And they also buy the book. So they buy the book, they pay him or her for taking the session. They attend the session every day, half an hour, Monday to Friday. ऐसे भी हो रहे हैं। There are people who tell me, Pinaki, आप भी ऐसा करो ना, I'm ready to pay you. Why they ready to pay me? Because of 2 things. कि मैं I will be in discipline, और आपके सेशन में रहूंगा तो कुछ ना कुछ नया चीज मिलने वाला ही है। I'm ready to pay for that. इसका मतलब क्या? इसका भी एक मार्केट है। Okay, so do you feel unsure about what product, service or skill to offer? If your answer is yes, you can write yes. If your answer is no, don't write anything. हो सकता है you are already clear that this is the product or service or skill that I can offer, but I am not offering it. That is a different thing. Okay, question number 17. Do you struggle with setting or asking for your worth? पैसे मांगना कि मैं ये सर्विस देता हूं, उसके बदले मुझे इतना पैसा चाहिए, and I'm absolutely clear about it. सारे ऐसी Yeah, you have learned it ना पूनम, मेरे से अभी कुछ दिन पहले।
ये डिस्कवर्ड कि मैं कैसे लोगों से पैसे मांगता हूँ. नथिंग रॉन्ग विद दैट. आपको मांगना ही है ज्यादा, तो वो क्या बोलेगी कि नहीं दूंगी. मुझे क्लाइंट को कोट करना होता है ना, तो सोचती हूँ 5,000 बोलूं, फिर बोलूंगी नहीं 4,000 बोल देती हूँ। मतलब ज्यादा मांगने में ना ऐसा लगता है कि क्लाइंट चला जाएगा, वो बिलीव अभी भी है। हाँ हाँ हाँ. इट्स ओके, जस्ट राइट इट डाउन कि अगर आपको वो बिलीफ है, जस्ट राइट इट डाउन. लिखा. ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद दैट. इट इज जस्ट आपको लगता है कि ये ऐसा है. नथिंग रॉन्ग विद दैट बाय द वे, एंड डू नॉट हैव एनी गिल्ट फीलिंग. या. Question number 18. Do you believe money is not aligned with your values or spirituality? पैसा मांगना बुरी बात है ना. मैं इतना स्पिरिचुअल हूं कि आई कैनॉट आस्क मनी. दुनिया के जितने भी वर्शिप के प्लेसेस हैं, सब जगह पे गेट के बाहर ही रखा हुआ होता है दान पात्र. कोई कोई लिखते हैं अनुदान पात्र, अभी डोनेशन बॉक्स. टेम्पल्स में तो वो निकलने नहीं देते हैं, बोलते 1 रुपए दे के जाओ, बट यू हैव टू डोनेट, ऐसा भी है. हाँ, ऐसा भी है. भगवान को शर्म नहीं आता है. आप भगवान के बच्चे हो, आपको क्यों शर्म आनी चाहिए. गॉड खुद आपको बोल रहा है कि देखो मेरे दरबार पे आए हो, मेरे दरवाजे पे आए हो, मैं पैसे देके अंदर आना पड़ेगा. लोग वहां भी ट्रांजैक्शन करते हैं, सोचा चलो मैं 10 रुपए डाला तो कम से कम 100 रुपए मेरे से वापस आनी चाहिए. बट डाला ना. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. राइट. एंड देन द लास्ट वन, sorry, number 19. Are you avoiding learning or upgrading the skills that can help you earn? आप ना 3-4 फ्री सेशंस लो हफ्ते में. आप देखो, you will find a group of people who are in all your training programs. You will always find them there. The moment you ask them to pay you for any training program, they won't. आप किसी को सलाह दो, वो आपसे हर तरीके की सलाह लेंगे. The day you ask money from that person, they may avoid. ट्रू. है ना. Because they are not giving value of your time. आप अपना समय, अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर रहे हो. They are willing to take that, but they are not willing to pay you for that. राइट. How long you want to continue with them? Blocks, they are all your blocks. हो सकता है उसी टाइम आप किसी और को वही सजेशन देके, कोई और सजेशन देके आप उससे पैसे कमा सकते. Also, these kind of people not valuing our suggestions. Exactly. So need to focus on the right person. Exactly. So my question is, are you also doing similar things or not? That is, you need to identify. Are you also avoiding learning, upgrading the skills that can help you earn? If your answer is yes, only then write yes. Otherwise, you don't need to focus on this question. Then comes the last question. Are you lacking discipline, dedication, and determination to earn? You know, this question number 20 is the ultimate question. Are you lacking discipline, dedication, and determination to earn? Now you can see all your yes answers, है ना. ये जो आपने yes answers देखे हैं, just review the question once again and figure out which of the 3 yes answers are the heaviest one for you. सबसे बड़ा बोझ है आपके लिए. See, every block is a load for you, by the way. You know, every yes is a burden for you. These questions
they just look like questions on a piece of paper. इसका print out लेंगे ना, it will just look like a piece of questions on a piece of paper. But this question paper is $1 million question paper. अगर आप जिंदगी भर सिर्फ इसी क्वेश्चन के ऊपर काम कर गए ना, ये 20 क्वेश्चंस, चाहे आप आगे का मनी मैग्नेट मास्टरमाइंड प्रोग्राम अटेंड करो ना करो, अगर आपने अपने ऊपर सिर्फ इन 20 क्वेश्चन के ऊपर काम किए, ऑनेस्टली, सीरियसली, विद कंप्लीट डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एवरी डे, आपको फाइनेंशियली फ्री बनने से कोई नहीं रोक सकता. Okay, so now what you should do, just take your time, take 1 minute, 2 minutes, look at the questions and figure out which are the ones, the top 3 ones that are creating the biggest hurdle for you. सबसे भारी आपको यही लग रहा है कि ये अगर मेरा हैंडल हो गया तो बाकी का मैं हैंडल कर लूंगा, काइंड ऑफ. Just figure out the top 3. Just let me know if you want to scroll down, फिर मैं scroll down करूंगा. After finalizing, what I have to do? अभी finalize करो. So what you need to do, you need to finalize three of them, which you are finding the heaviest one for you. Yes, heaviest one. Heaviest one. Out of all the yes, you just need to figure out the heaviest ones for you, the top 3. ये जितने मैंने आप लोगों को वर्कशीट दिया ना, इन सब का प्रिंट आउट लेके रख दो, अपना एक फाइल बना दो. So that you can open it whenever you want. And I will strongly recommend each one of you कि आप इसी से एक प्रोग्राम बनाओ. कुछ नहीं, छोटा सा अमाउंट चार्ज करो ना, से 195 रुपीज चार्ज, एंड टेक 1 वीकली सेशन. आपका खुद का प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाए कहाँ कहाँ पे आपके खुद के लूप होल्स हैं, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन. You know, when you teach, that is the best way to learn. Yes. So you create a team. लोगों को बोलो, उनको ये भी बोल सकते हो मैं कहीं से सीख रहा हूँ, वहां पे मैं इतना खर्च कर रहा हूँ और मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे सिर्फ 200 रुपए. And you create your team of mastermind. See, the title of this program is Money Magnet Mastermind. We are creating a team of masterminds. आगे जाके इसका हम और भी बड़ा पैमाने में गेम खेलेंगे. We'll introduce each other to others. हम बोलेंगे आपको ये चैलेंज है, you just talk to this person. आपको ये चैलेंज है, just talk to this person. I know her, I know him. Somebody from Bombay say, ask me, Pinaki, do you know any chartered accountant? This I will just send him or her to Pune. Oh, I know her. She's in our money magnet mastermind group. Introduce भी कर दूंगा अपना ग्रुप का. And you take her service. If somebody talking about education, I can connect it with Rajeshwari. कोई transformation की बात कर रहा है, I'll connect it with Rajeshwari. Anybody is talking about insurance, so Manoj is into insurance also. He's into life insurance. So I can guide that person to Manoj.
और आप इनसे बात कर लो, इन्हीं को मैं जानता हूँ। एंड इमेजिन ऑन दैट वेरी डे जब हम सब मिलेंगे एक्चुअली फिजिकली, each of us will relate to us as a mastermind, कि इस चीज का मास्टरमाइंड, इस चीज का मास्टर, और हम सब के साथ एक दूसरे के साथ सुनेंगे, हम एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे, पता नहीं है कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ओके, सो हैव यू आइडेंटिफाइड? यस। Yes. ठीक है, सारे हो गए ना? शुड आई क्लोज दिस विंडो? स्क्रॉल, हाँ। देख ले तो, नीचे का भी एक बार देख। ओके। एवरीबॉडी डन? Yes. यस, मनोज डन? Yes, sir. ठीक है, इसलिए जरूरी नहीं कि अभी एक्यूरेट होना है। The whole thing is you are getting an idea what needs to be done. Now you have identified the top three burdens, है ना? ठीक है, अब top 3 burdens को लेकर हम एक एक्टिविटी करेंगे। And before that, let us take the screenshot. So we are on camera and keep your eyes wide open and let's count 1, 2, 3 together. So 1, 2, 3. Beautiful. So अभी हमें क्या करना है, ये जो आपने टॉप 3 आइडेंटिफाई किया है ना, उसमें से एक अभी ले लो, जस्ट पिक वन ऑफ देम, व्हिचएवर इट इज। मान के चलो इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, ये अगर हट गया तो मैं मोरलेस फ्री हो जाऊँ। So I can tell you about myself. For me, the last one was the most important. Same for me as well. Number 20 was the most important word for Yes. dedication, determination, and discipline. Dedication है तो discipline नहीं है, discipline है तो determination नहीं है. So I was completely like क्या बोलूं, trapped into that. और मुझे लगता है शायद अभी मैं वहीं पे फंसा हूँ, जिसकी वजह से मैं और भी कुछ नहीं कर पा रहा, कि वहां पे मैं डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन नहीं डालूं. Okay, so now what we have to do is, let me share the next screen. This is also something I shared in the last session. So now as you have taken the first one, the most important one, what we need to do is, we need to apply these 5 magical steps to break your money blocks. Okay, this also I have shared in the group in the last week. So for each yes answer, write in your notebook. So what we are talking about is the pick up the first one, the most important one out of those 3. और सिर्फ उसके ऊपर अभी ये काम करना है. We'll just do it right away. We'll take another 5 minutes to go through it. Then you just put your actual time to get it done. Okay. What you need to do is, you need to write actually what is that one belief which is supporting your response. What is that one belief which is supporting your response? आपने yes लिखा ना, yes जो लिखा है उसके पीछे मेन रीजन क्या है for that particular block? मेन रीजन क्या है? It could be I'm afraid of sharing my ideas with anyone. मेरे पास ये था, तो that's why I have, that was my first thing. मुझे लगता था कि मैं किसी का तो आइडिया शेयर कर दूंगा तो फिर वो ही उसको लेके काम कर लेगा एंड मेरे को कुछ मिलेगा नहीं. Okay, this is one of them. Second one is, I am not afraid because I am afraid of failure. I am not ready because I am afraid of failure. ये भी हो सकता है. I don't want to hurt the sentiments of others.
ये मेरा एक बहुत बड़ा ब्लॉक था। तो मुझे लगता था कि द मोमेंट आई आस्क द मनी आई विल हर्ट दैट पर्सन सेंटिमेंट, है ना। देन उसमें ये भी फैक्टर कभी कभी आ जाता था कि लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, तो फिर आई विल बी हर्टिंग समबडी व्हेन आई टेल दैट पर्सन कभी मैं इसमें अपना समय देना चाहता हूँ, आई डोंट हैव मनी टू स्पेंड, आई डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विथ यू, हो सकता है आई एम हर्टिंग द सेंटिमेंट ऑफ अदर्स। It could be I never got any support from my family members. It could be I feel uneasy discussing about money with people, with anybody. ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकता है, आपके एग्जाम्पल इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, but find out that one belief which is supporting your response. आपने मुझे 2 बार कॉल किया था ना, तो इसलिए तू लिख गया यहाँ पे। Okay, this is step number 1. Step number 2 is when, where and how did you learn this belief? What happened? Actually, कब कौन सी घटना घटी थी जिसके वजह से आपने अपने लिए ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरे से लाइक मेरे लिए हमेशा ये सी रहेगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं। When, where and how did you learn this belief? What happened? Now, I would like to invite you to have a one-on-one with me on this particular activity. But first you do it on your own. Then you book a time with me, 1 घंटे का टाइम जो आप सबको मिलता है मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरे साथ one-on-one काम करने के लिए. You take advantage of it. So I would like to invite you to do this activity with me. Okay, so that you become a masterpiece in doing it. And once you become a masterpiece in doing it, you can do it with others also. That is where you can make money. So question number 3 is this step number 3. Once you do that, once you identify when, where, and how did you learn this belief, what actually happened, next thing is to you still want to hold on to this belief even if it is not serving you. Okay, maybe your belief is I'm afraid of sharing my ideas with anyone. अब मेरे साथ ऐसे कई बार हुआ है, मैंने लोगों से आइडिया शेयर किया, कैसा बना रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हुआ है मेरे साथ। मैंने बोला तू ये करके देख, मैंने तुम ये करके देखो। मेरे साथ भी हुआ, मतलब मैंने जिसको गाइड किया वो पर्सन आज बहुत अच्छा कर रहा है। है ना। जूनियर्स हैं अपने से। एग्जैक्टली कुछ केस में ऐसे भी होगा कि देखो मेरा बस चलता तो मैं ये कर लेता। मतलब मैंने वो अप्लाई नहीं किया एक्चुअली, मैं हाँ एक्शन नहीं हाँ लिए थी, उनसे हाँ। दूसरे को बताया, उसने अप्लाई किया, उसने एक्शन लिया। तो ये भी हो सकता है, सो यू कैन कैच योर सेल्फ। So that now the that third question comes is you still want to hold on to this belief even if it is not serving you. Naturally the answer should be no. If the answer is yes, फिर 4 और 5 की जरूरत ही नहीं। So if the answer is no, that I do not want to hold on this belief anymore, then what is a new empowering belief you can adopt instead now? अब उसके बदले में मैं नया बिलीफ क्या यूज कर सकती हूँ? So then that could be one of these, or that could be something which could be for you can discover for yourself also. But I have found that these normally work. Like no one can steal my ideas, even if they could speculate what is going on in my mind. This could be a very strong belief. Instead of I am afraid to sharing my ideas with anyone, मैं अपना आइडिया शेयर भी कर दूंगी, लेकिन मैं अपने आप को तो शेयर नहीं कर रहा हूँ। It's like जब दुर्योधन और अर्जुन गए थे श्री कृष्ण के पास, हाउ डू वांट माय सपोर्ट? तो मेरे पास 2 चीज है, एक मैं हूं और दूसरा मेरी सारी सेना है। तो दुर्योधन ने बोला कि मुझे अपनी सारी सेना दे दो।
वो छोटा भाई थे तो उसको पहले ऑप्शन दिया गया था, क्योंकि और अर्जुन के पास तो फिर बचा ही नहीं कुछ, उसके पास ये श्री कृष्ण ही बचा। अब देखो श्री कृष्ण कितना सयाना था, उसने अर्जुन को नहीं बोला, हो सकता था अर्जुन भी बोल सकता था मुझे तुम्हारी पुरानी पूरी सेना दे दो। सो दिस इज a very powerful, very empowering belief. No one can steal my ideas, even if they could speculate what's going on in my mind. Number two, I am extremely good at planning my work in detail before I start working on my plans. It could be, I know how much I am worth. It's only a matter of time for others to discover it. It could be, I know what I am good at and how to make things work for me. It could be, I am passionate about discussing money, wealth, abundance, and prosperity with anyone. सी ये ऊपर के जो 5 मैंने रीजंस दिए हैं, 5 बिलीफ्स, ये सारे उसी के रेसिप्रोकेटिंग बिलीफ्स हैं. So if you are having one of these top 5 beliefs, then you can create one of the remaining bottom 5 beliefs also for yourself. And once you create that new empowering belief, the next thing would be the most important one, which is what one action can you take today to reinforce this new belief. And you have to take that action today itself. What one action can you take today to reinforce this belief को reinforce करना है. उसके लिए मेरे को एक एक्शन आज लेना है, और अगर वो मैंने एक्शन ले ली और ये बिलीफ reinforce हो गया, my next step will be to take that action for next 7 days. No matter what, whatever it takes. Okay. So I want all of you to come back to me, come back in the group. Group में आप एक statement मुझे आज रात तक डालोगे, रात के 11:59 से पहले. Before next day arrives, आप डालोगे आप अपने लिए कौन सा एम्पावरिंग बिलीफ क्रिएट किया है, और उसके लिए आज आपने एक्शन क्या लिया वो लिखना है. लेने वाला हूं वो नहीं, एक्शन लेने के बाद लिखना. जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा एक्शन हो, इट कुड बी स्मॉल एक्शन आल्सो. मैं आपको एक इजीएस्ट ऑप्शन दे रहा हूँ. इजीएस्ट ऑप्शन कुड बी कि आपने बोला कि चलो मैं फाइनेंस रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू करूंगा आज से, और आज मैंने 10 पेज पढ़ लिया या चैप्टर 1 पढ़ लिया. से फॉर एग्जांपल आई टुक दिस बुक, ठीक है, मैंने इस किताब लिया, मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, एंड देन एट नाइट व्हाट यू विल राइट दैट ओके आई पिक्ड अप दिस बुक and I read page this to this, or I read page 10 pages, and I'm going to do it every day. ठीक, ये मैं आपको एकदम इजीएस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ. जरूरी नहीं कि यही करना है. यू कैन डू एनीथिंग, whatever, it all depends on you. आपका ब्लॉक कौन सा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसको आप कौन सा नया बिलीफ से रिप्लेस कर रहे हो, एंड देन व्हाट वन एक्शन यू आर टेकिंग टू रीइंफोर्स दैट बिलीफ. And don't leave it for one day. Make today your day one. Make today your day one. अपने सबकॉन्शियस को ये बिलीफ दिलाना है. अगर मैंने बोल दिया तो करना, नहीं तो आपका सबकॉन्शियस उसी चाल में चलेगी अभी तक जैसे चल रहा है. तो ये क्या है, तो मेरे को रोज बोलता है
He himself is not serious or she herself is not serious. मुझे कौन सा सीरियस होने की जरूरत है? सबकॉन्शियस इज द इडियट पार्ट ऑफ द ब्रेन. उसको जो बोलेगे वही करता रहता है, कुत्ते की दुम को सीधा करने की तरह. वही उसका काम है. 95% ऑफ द एक्टिविटीज इज कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड. हार्ट को कैसे चलाना है, लंग्स को कैसे चलाना है, ये सारा उसका काम है. द मोमेंट यू गिव इट अ न्यू एक्टिविटी, वो थोड़ा सोचता है कि करूँ ना करूँ, पहले देखते हैं ये खुद कितना सीरियस है. बहुत लाइटली लेता है. बिकॉज इट टेक्स इट लाइटली, it also reciprocates it. And when it reciprocates you, कि यार तुम कितना भी सीरियसनेस देखो, मैं तो इसको लाइटली लेने वाला, फिर आप भी थक जाते हो और वो चलो छोड़ो यार, जिंदगी चल तो रही है ना. कुछ लोगों का लाइफ में एंटरटेनमेंट क्या जानते हो? मॉल में गया, या तो हल्दीराम में जाएगा, या तो मैकडी में जाएगा, या तो डोमिनोज में जाएगा, फिक्स जगह है, या तो बर्गर किंग में जाएगा, रोल्स किंग्स में जाएगा ना, फिक्स जगह है, वहीं जाएगा. चायोस में जाएगा, फिक्स. सो इट्स अप टू यू. अपनी तैयारी करो. सी, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस. Let us actually play this serious game, that we will all meet together in a good place. सब मिलके मजे करेंगे, वैकेशन करेंगे. उसका पैसा हम एक्स्ट्रा जनरेट करेंगे इसी प्रोग्राम से. तो उसमें हम अपना सैलरी का, अपना एग्जिस्टेंस सोर्स ऑफ इनकम का एक पैसा भी नहीं डालेंगे. Yes. And I'm going to give full support for that. आप, if you are fully ready for it, आप मुझे दिन में 10 बार कॉल करो, मैं आपका कॉल 10 बार उठाऊं. You create your own ways of making money and be absolutely serious about it, to figure out what are those blocks which are not allowing you to do that. Blocks को खाली हटाना है रास्ते से. ठीक है? Let's have a 1 minute feedback from each one of you before closing the session. I have few blockages that I'm going to work that I have noticed. The major one. The first one, are you overwhelmed by too many ideas or choices? This is I'm having. The serious one is, are you unclear about your financial goals or target? I will accept it. This is the major one. And do you ignore or delay action on new opportunities? The major from where I can create the money. I feel I accept this one. And this work, the sheet that you have given to us, I'm going to print it out, and I have just taken an oath for myself that I'm going to do this every day. And I'm visualizing, yes, I'm going to meet you people, and my 1 lakh target is there to do at any cost, no matter what. No matter what, and whatever it takes. No matter Absolutely. whatever it takes, I'm going to do this. ऐसा सोचो कि अगर ये वाकई हो गया तो कैसी होगी. Yes, sir. Yes, sir. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नहीं हुआ, नहीं हुआ तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा. लेकिन अगर हो गया तो, अगर हो गया तो क्या होगा. या, who is next? Go ahead. So मेरा बिगेस्ट जो है दैट इज द लास्ट वन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन नहीं है. Second, I'm using social media, I'm doing branding, but not particularly for the services I'm offering.
for which I'm charging. So that I'm not doing. I will increase that. I'm doing, but percentage is very low. So 20% I'm marketing my service and 80% are the other things I'm doing. And another one is like I somewhere hesitate in asking money. So there is a hesitation, and not only to my clients, to anyone, like from the family members, from uh, anywhere. I'm like, I will not ask for money. Somewhere it's related to my uh, independence, self-worth, ego, whatever we can say, but there is something that मैं किसी से नहीं लूंगी वाला belief. ठीक है, अब इस पे हम उन 5 स्टेप्स पे काम करेंगे. पहले आप खुद काम करो, देन फिक्स अ मीटिंग विद मी एंड वी विल वर्क टुगेदर. 1 घंटा कम से कम लगेगा. तो 1 घंटा अपने लिए पूरा अपने आप को पूरा आइसोलेट करके मार्क करके रखो. बट दैट 1 hour विल बी द बेस्ट गिफ्ट दैट यू विल गिव योरसेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टाइम. आई प्रॉमिस यू. यस मनोज. Yes, sir. Actually, the last one is really blocking this thing. Dedication and determination is I'm lacking actually. And 2 more is 5 and 6. Little bit 5 point or 5 is I'm not clear about the financial goals and targets I have not set. And 6 is delay actions, new opportunities. These 3 things actually, I feel this 3 things is blocking my program, this whatever I'm thinking. So I will try my best to action on these 3 things. ट्राई माई बेस्ट को रिप्लेस कर दीजिए वॉट एवर इट टेक्स. Yes, yes. है ना. ट्राई माई बेस्ट में से आपको बच्चा अगर बोलता है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्कोर, तो आप बोलोगे यार इसलिए मैं तेरे पीछे थोड़ी पैसा खर्च कर रहा हूँ. तो बच्चा अगर Yes. बोलेगा वॉट एवर इट टेक्स मैं करके दिखा दूंगा पापा, आप मालिक मुझे खाली बोल दो, Yes. फिर बच्चा करेगा. तो वॉट एवर इट टेक्स मतलब अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. फिर से आई विल ट्राई माई बेस्ट, फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर छोड़ दी. Right, sir. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग. Right. है ना. गुड. एंड इन सब का ना प्रिंट आउट निकालो. जितने भी सेशंस अभी तक आप लोगों ने मेरे से लिए हैं, जो नहीं लिया वो भी मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. एंड पर्टिकुलरली दीज 3 असाइनमेंट्स जो मैंने शेयर किया, जिस पर हम काम कर रहे हैं सिंस लास्ट मंथ, इन सब का प्रिंट आउट अपने पास बना के एक फाइल में करके रखो. बिकॉज यू नीड टू रेफर टू दोज. हो सके तो ऑलमोस्ट एवरी डे उसके लिए 15 मिनट एलोकेट कर दो. एंड यू विल जस्ट गो थ्रू दोज असाइनमेंट्स एंड लाइक असेसमेंट शीट्स, एंड जो भी स्कोर है उस स्कोर को एक बार चेक करो एंड वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी जो हमने आज डिस्कस किया. इसको तो अभी आप नेक्स्ट 7 डेज करो हर दिन. और रात को मुझे एक मैसेज देना है. यू नो दैट राइट. आज हमने दिस इज द एम्पावरिंग बिलीफ आई क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ एंड दिस इज द एक्शन आई टुक. एंड वॉट एवर एक्शन यू आर गोइंग टू टुक टुनाइट, मेक श्योर यू डू इट ओवर नेक्स्ट 7 days एटलीस्ट फॉर हैंडलिंग दैट पर्टिकुलर इशू. तब जाके वो धीरे धीरे थोड़ा सा हैबिट में बदलेगा. एक बार हैबिट बन गया देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. वो फिर अपने आप इट विल टेक केयर ऑफ. ठीक है. कैन वी क्लोज और यू हैव एनी क्वेश्चंस? So no questions. Let's close. ठीक है. So I'll wait for 3 inputs by tonight. कोई इनपुट छोटा नहीं है, कोई इनपुट बड़ा नहीं है. ठीक है. It is your responsibility to take that action and make your life worth. भगवान आपको इंसान का जिंदगी दिया है. You know, like when I talk about that each one of is a divine angel, उसमें उसके पीछे 3 रीजन है. तीसरा रीजन मैं बहुत कम लोगों के साथ शेयर करता हूँ. तीसरा रीजन ये है कि जाओ और ब्लड डोनेट करके आओ. साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच गया. जो डिस्पेंसर इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग ब्लड बना नहीं पाए.
उसके लिए अभी भी हमें ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करना है। वी कांट हियर यू पूनम। एक्चुअली आई डोनेट ब्लड डोनेशन में 2 रीजन है। एक्चुअली मुझे थायराइड है, तो बोलते थे पीपल कांट डोनेट। हाँ खुशी। और जैसे एक बार मैंने किया था और पता नहीं क्या हुआ, आई फेंटेड। मैं जल्दी उठ गई या फिर वहां पे उन लोगों ने प्रॉपर कुछ नहीं किया था, एंड आई फेंटेड। तो मुझे उसकी वजह से तभी डर बैठ गया है करने का। हाँ। हाँ, तो वी हैव टू ओवरकम दिस फियर ले जाओगे? एंड थायराइड इज क्योरेबल बाय द वे। Then we can do. Yes, you can. Okay. See, thyroid is a lifestyle disease. It's not a communicable disease. So Okay. you are already into activities. You are already sharing those pictures. तो लेकिन उसको बंद नहीं करने का है। नहीं, डोनेशन वो आफ्टर दैट एक्सपीरियंस मुझे अभी मतलब वो देख के भी डर लगता है। मैं वन कैंप में भी नहीं जाती हूँ। Now you need to change it. How can I? Instead of saying I am not good enough or I am not, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय फेंटिंग, दैट्स द फर्स्ट टाइम। that is just one of an event. Don't even use the word faint. बोले कुछ हो जाता पता नहीं क्या हुआ था. And then you see what happens. It's all in your words. And actually I was with my daughter, so for the 2-3 years I was scared कि मैं इसको कहीं लेके जाऊंगी और मैं फेंट हो गई क्या, तो इसको क्या होगा, कोई उठा के ले जाएगा। मतलब वो कोप अप करने के लिए टुक टाइम। If I'm going somewhere with her. What you can also do, you can encourage people to donate blood as well. हम्म। See, मैं एक संस्था चलाता हूँ, उसका नाम है रेड बलून्स। आप उसके बारे में बहुत कम लोगों को ही मालूम है। And through that organization, I help people to arrange blood donors all over India. Okay. In any hospital, if any patient needs blood donors, I can arrange. At Bharat Vikas Parshad we also do collaboration to do these blood camps. So on the 18th July we will be doing. Okay. ठीक है. So this is what I'm suggesting. That see, if you think that you cannot, you arrange. We Right. encourage people to do It that. in any way we can do. You think about these people. मैं आपको एक सिंपल, normally I donate for thalassemia patients कि उनको 21 दिन से 28 दिन के अंदर हर बार कम से कम 1-2 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है. So you can help them. You find out who are thalassemia major जिनको blood donors की जरूरत होती है. Then you create a team of donors for them. उनको देख के आपका दर्द वैसे ही खत्म हो जाएगा. दर्द और डर दोनों ही खत्म हो जाए. Then you'll be more empathetic rather than sympathetic. Just give it a shot. Okay. Bye bye.